हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम तुम मनकर जो सीपेट एग्जाम हो जाइए तार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। तेणु तुम तो परीक्षा दे सारी प्राय चैनल क्वेश्चन आंसर सब आंसर की ये कर सारे आमर आज अनऑफिशियल आंसर की डिस्कसन करवा। चलो ताले वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और सांग मन पाक शेयर कर। चलो ताले आज वीडियो स्टार्ट करिया। प्रथम क्वेश्चन होची कोन ना, एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन गुडी होची जॉन डुई, टागोर, कृष्णमूर्ति एंड रूसो। तेणु यार सठिक उत्तरटी होची जॉन डुई। जॉन डुई कहते जे एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, द थ्री पोलर्स आर द स्टूडेंट, द टीचर एंड द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करिकुलम दैट एम्फासाइजेस स्पिरिचुअल रियलिटी एज द अल्टीमेट ट्रूथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शन गुड़िक हूँ नेचुरालिज्म, आइडियालिज्म, प्राग्माटिज्म एंड रियलिज्म। यार सठिक आंसर टी हूँ ऑप्शन बी जहाँकि आइडियालिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन एंड सांख्य एम्स एट। ऑप्शन गुड़िक हूँ सोशल रिफॉर्म, सेल्फ रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यार सठिक उत्तर टी हूँ सेल्फ रियलाइजेशन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कौन पे ये अति सहज सब क्वेश्चन पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ गांधीज नई तालीम एम्फासाइज्ड कौन। ऑप्शन पड़ी मैनुअल वर्क, मिलिटारी ट्रेनिंग, रिचुअल लर्निंग एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तेणु ये अति सहज क्वेश्चन। तेणु गांधीजी नई तालीम कौन एम्फासाइज करते ना मैनुअल वर्क करते। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉलोअर ऑफ अ प्राग्मेटिक फिलोसफी। ऑप्शन गुड़िक हूँ पेस्तालोजी, विलियम जेम्स, जॉन डुई एंड किलपाट्रिक। यार सठिक उत्तरटी हूँ कौन ना पेस्तालोजी। पेस्तालोजी प्राग्मेटिक फिलोसफीर फॉलोअर नथिले, नॉट ए देछि। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एस्थेटिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज। ऑप्शन हूँ बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदांत एंड सांख्य। तेणु करेक्ट आंसर कौन पे कमेंट माध्यम जन मत जो मैंने कर सठिक आंसर। तेणु यार सठिक उत्तरटी हूँ जैनिज्म। जैनिज्म एस्थेटिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, द मोस्ट एस्थेटिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज जैनिज्म। The next question is the teacher cannot truly teach unless he is learning himself is a viewpoint articulated particularly by। ऑप्शन गुड़िक हूँ गांधी, टागोर, श्री अरविंद एंड वेदांत विवेकानंद। तेणु यार सठिक आंसर टी हूँ विवेकानंद, सॉरी सठिक आंसर टी हूँ टागोर। टागोर होती जी कि आमर आर.एन. टागोर, रवीन्द्रनाथ टागोर से कही ए टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच अनलेस ही इज लर्निंग हिमसेल्फ। जदि गोटे शिक्षक निजे शिक्षण नौ ना निजे शिक्षा ग्रहण कर कि पढ़ु ना से गोटे ट्रूली गोटे शिक्षक हो पार ना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिथुन चक्रवर्ती वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा इन 2022। व्हिच इंटेलिजेंस लेड हिम टू विन द प्राइज। ऑप्शन गुड़िक हूँ से विजुअल स्पाटियल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। तेणु यार सठिक उत्तरटी हूँ बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। The next question is nothing succeeds like success, this statement is associated with a Thorndike's। ऑप्शन गुड़िक हूँ लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यार सठिक आंसर टी हूँ ऑप्शन बी लॉ ऑफ इफेक्ट। The next question is who defined psychology as the study of human behavior and human relationships। ऑप्शन गुड़िक हूँ बोर्निंग, लैंगफेल्ड, स्किनर, क्रो एंड वुडवर्थ। यार सठिक उत्तरटी हूँ पे क्रो एवं क्रो होती कहते जे साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग इन ज्ञानेस हायरार्की। ऑप्शन गुड़िक हूँ कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिग्नल लर्निंग एंड रूल लर्निंग। यार सठिक आंसर टी हूँ ऑप्शन सी दैट इज सिग्नल लर्निंग। Then the next question is who among the following proposed the idea of the hierarchy of needs। रॉबर्ट मिल्स, ज्ञानी, I.P. Pavlov, Ivan P. Pavlov, हावर्ड गार्डनर एंड अब्राहम मास्लो। यार सठिक आंसर हूँ ऑप्शन डी अब्राहम मास्लो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रिब्यूटेड टू पियाजेस थ्योरी। ये पे क्वेश्चन अच्छी कैन नॉट बी। तेणु यहाँ भल भाव देख ना फंबल हम।
Development occurs in qualitative stages. Children construct and use knowledge about their world. Learning takes place through constant practice and children act on their environment. यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कन्स्टाट प्राक्टिस तेणु जब प्राक्टिस न तब आम जाने प्राक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट तेणु प्राक्टिस द्वारा ही लर्निंग पॉसिबल होता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लास टीचर एडमिनिस्टर्ड द थेमाटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जहाँ को कहुए टीएटी टेस्ट टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू आसेस देयर अचीवमेंट अवेयरनेस एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी. यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन डी पर्सनालिटी ये हूँ गोटे टीएटी बा थेमाटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. Then the next question is which of the following articles of the Indian Constitution deals with the promotion of educational and economic interests of the STs and SCs and other weaker sections. Option गुड़ी को Article 14, Article 16, Article 45 and Article 46. यार सठिक आंसर इट होची ऑप्शन सी दैट इज Article 45. weaker sections पाई आमर Article 46 एटा हबो Article 46. Then the next question is which of the following is not a characteristic of modernization. Modernization और किए गोटे characteristics नुह एटा देखिबो बोले माने नॉट अछि urbanization, indigenization, increased social mobility and industrialization. आर सठिक आंसर टी होची बी indigenization. indigenous ru indigenization. Then the next question is equity differs from equality because equality option गुड़िक होची treats everyone identically, provides according to need, creates a discrimination and ignores individual differences. आर सठिक आंसर टी होची option B that is provides according to need. Then the next question is CWSN stands for children with social needs, children with social network, children with special needs and children with society needs. यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन एज ए मिनिएचर सोसाइटी वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डुई, अरिस्टोटल, रूसो एंड प्लाटो. यार सठिक उत्तर टी होची कोन पिला माने ना जॉन डुई कहिथिले एजुकेशन इज ए मिनिएचर सोसाइटी. Then the next question is in social change alteration in social organization relates mainly to its structural aspects, functional aspects, both A and B and neither A nor B. यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जहाँ कि स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर द फर्स्ट 5 कैटेगरीज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी चूज द करेक्ट सीक्वेंस. कौन अच्छी करेक्ट सीक्वेंस कौन ऑप्शन गुड़िक देछि हमर जे यार सठिक आंसर टी होची डी ऑप्शन डी 1 2 3 4 एंड 5 जो ऑप्शन रे अछि जो सीरियल रे अछि सही सीरियल रे अछि. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज teaching as a process is always on indirectional, always didactic, always intentional and always programmed. The सठिक answer is option is C always intentional. Teaching as a process is always intentional. Then the next question is children with individual difference should be taught in a school with teachers. आर सठिक उत्तर टी होची ट्रेंड टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स. जो मैंने इंडिविजुअल डिफरेंस अच्छा चिल्ड्रेन विथ इंडिविजुअल डिफरेंस से कौन दरकार ना एमती डिफरेंट पेडागोजी यूज करवा दरकार जे टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टीचर्स रोल व्हाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हिज और हर क्लास is to be a silent spectator and let children to do what they want, is to leave the class and let the children work on their own, is to be supportive and monitor each group, is to support the group that has the bright and talented children. आर सठिक आंसर टी होची पिला माने ऑप्शन सी दैट इज टू बी supportive and monitor each group. Then the next question is which of the following beliefs is good for learning? Ability is improvable, ability is fixed, efforts don't make any difference, failure is uncontrollable. आर सठिक आंसर टी पिला माने निश्चित भाव जानि परतो जेहेतु which of the following belief is good for learning तेणु लर्निंग होचे ability to improvable, ability to improve होवा कथा बा ability is improvable. Then the next question is which of the following objectives belong to the affective domain?
आर सठिक आंसर टी होची ऑप्शन बी डेवलपिंग ए फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स question number 27 the item difficulty index 0.80 represents that the item is very difficult, the item difficulty is uncertain, the item is ambiguous, the item is very easy. The satic option is option D, that is the item is very easy. Then the next question is classification and order both are present in dash scale of measurement. Classification and order dita jako ko scale re present achandi, ordinal, interval, ratio and nominal ko scale achandi na sathik answer ati option A ordinal scale re achandi. Then the next question is the teacher can utilize both assessment for learning and assessment of learning to option gudi hochi know children's progress and achievement level, then know the learning needs of the child and select a teaching strategy accordingly, assess the child's performance at periodic intervals and certify his or her performance, and D monitor children's progress and set appropriate goals to fill their learning gaps. The satic option is option D kon hochi na monitor children's progress and set appropriate goals to fill their learning gaps. The next question is if a test measures what is actually supposed to measure, it has high reliability, validity na usability na objectivity. आर सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी दैट इज वैलिडिटी, जहाँ आम मापिया को चाहूचे जदि ठीक भाव मापिला ताले वैलिडिटी अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टेस्ट दैट कंपेयर्स ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड इज कॉल्ड टीचर मेड टेस्ट, क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट, नॉर्म रिफरेंस टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट। आर सठिक आंसर टी होची ऑप्शन बी, जेहेतु सर्टन क्राइटेरिया देइछि तेणु आर आंसर हम क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if you are recording student temperatures in Celsius for a health check, which scale of measurement are you using? Nominal, ratio, ordinal or interval को स्केल एठी व्यवहार करुचे ना आमे इंटरवल स्केल व्यवहार करुचे। सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन डी इंटरवल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अफेयर्स रिसर्च बाय ऑप्शन ए होची इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन बी एलिमिनेटिंग बायस, रिड्यूसिंग जनरलाइजेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग sample size. The सठिक ऑप्शन इज सी reducing generalizability. Then the next question is if data analysis shows a strong relationship but no cause and effect, the study is likely experimental, historical or action research or correlational. आर सठिक आंसर टी होची ऑप्शन डी, जहाँकि कोरिलेशनल रिसर्च बोली हम कहि परिबा, स्टडी बोली कहि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनक्लूड्स एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ओनली। ऑप्शन गुडी होची एज, टेम्परेचर, इनकम एंड जेंडर, रिलीजन, एथनिक ग्रुप, कास्ट, सी रे होची जेंडर, एंजाइटी लेवल, रिलीजन, डी रे होची एकेडमिक स्कोर, एंजाइटी लेवल, रीडिंग परफॉर्मेंस। आर सठिक आंसर टी होची ऑप्शन डी, दैट इज एकेडमिक स्कोर, एंजाइटी लेवल, रीडिंग परफॉर्मेंस। Then the next question is which type of research is primarily concerned with solving a specific practical problem in a classroom setting? Action research, historical research, basic research or applied research? The satic answer is option A, that is action research. Next question is in which research design is sampling the least necessary? Case study, correlational study, comparative analysis and experimental study. The satic answer is option A, that is case study. Case study re research design sampling is the least necessary. Then the next question is what is the primary purpose of plagiarism checking in the report writing phase? The plagiarism माने कोन ना कोटा आर सठिक ऑप्शन to check for spelling and grammar errors, to format the bibliography correctly, to increase the word count of the research paper, to ensure the academic ethics and originality of the work. यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन डी, जहाँ जोटि कि आम ओरिजिनालिटी द्वारा टेस्ट करथाउ का द्वारा ना प्लाजियारिज्म चेकिंग द्वारा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सैम्पलिंग प्रोसीजर एंश्योर्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल?
इनसीडेंटाल पर्पसिव प्रोबाबिलिटी एंड नॉन प्रोबाबिलिटी ये क्वेश्चन जब भल भाव पे बुझे निश्चित भाव में तुमने आंसर कर जे मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड ता माने कौन यार सठिक आंसर होची प्रोबाबिलिटी सैंपलिंग जे समस्त ऊपर किसी प्रोबाबिलिटी रही है जे से माने सिलेक्शन हो पारे बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द रैंक डिफरेंस मेथड इज यूजफुल व्हेन data are in an interval scale, data are in a nominal scale, data are in ordinal form and sample size is very large. Here the correct answer is option C, data are in a ordinal form. Next question is a positively skewed distribution indicates that the tail is longer on the left side, tail is longer on the right side, mean is equal to median is equal to mode. Last option is distribution is symmetrical. Here the correct answer is option B, that is tail is longer on the right side. Then the next question is if a student has a T score of 70 then the Z score will be option A +1, option B -1, option C +2 and option D -2. Here the correct answer is option C, that is +2. एटी कौन करा ना टी स्कोर आम केमी बाहर कर जेड स्कोर केमी कराए ना जेड इज इक्वाल टू 50 + 10Z. T score होची 70 then Z score is equal to Z is equal to 50 +